Hello, good evening. Hmm? Hmm. Good evening, boys and girls. Give me the clearance, please. Am I audible and visible? Rupesh Varshne, Saksham, Porus. Good evening. All fine. Okay. Okay, thank you. So, very good evening to all of you. Welcome to PW Platform Gate Wallah segment. This is Dr. Khalil Khan here. और हमारा कोर्स चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स. तो बच्चों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा इन चैप्टर कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स from the operating system, gate exam perspective, and also general understanding of memory management. See, if a process is preempted from CPU, why will it release other resources? It will release CPU. Rakshit, समझे आप बात को? Rakshit, कि when a process gets preempted from CPU, it does not release, it need not release all the other resources that it is holding. Only CPU gets released from it. I hope you are able to understand. तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था डेडलॉक का चैप्टर, देखिएगा. और आज हम देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट. दो क्लास में डिस्कस करेंगे इसे. इन द फर्स्ट पार्ट विल कॉन्सेंट्रेट ऑन बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, और सेकंड सेशन जो हमारा होगा कल होगा, जहां पर हम एक्सक्लूसिवली वर्चुअल मेमोरी पर डिस्कस करेंगे. तो मेमोरी मैनेजमेंट चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे दो सेक्शन में कवर करेंगे हम. ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर बेसिक बैकग्राउंड लेंगे पहले. So first point, when I say memory, we are trying to refer to main memory, which is also said to be primary memory. Main memory or primary memory. Right? Examples of primary memory or main memory includes RAM, ROM, cache. So जब हम memory management बोलेंगे, the major part or the major chunk of this is RAM. So we are essentially concentrating on RAM. And it is quite important that you should have familiarity with two things. One is called the abstract view of memory, and the second part is physical view of memory, rather than we say memory interconnection to CPU. काफ़ी क्वेश्चंस हम इन अर्लियर पेपर्स ऑन मेमोरी इंटरकनेक्शन और मेमोरी इंटरफेसिंग टू सीपीयू पे आए हैं, आगे भी आ सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा बहुत डिस्कशन उस पर भी कर लेंगे. तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए स्मॉल डिस्कशन ऑन व्हाट वी कॉल इट एज एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ मेमोरी. चलिए स्टार्ट करेंगे. तो विल सी एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ मेमोरी. That means, how do a programmer or the developer of operating system visualize memory as? That is what I mean by abstract view. So conceptually, memory can be seen as a linear one-dimensional array of words, like this. Array of words.
So these are called words or locations. And sometimes we even call it as memory cells. Words or locations or memory cells. अब यहाँ पर आपने एक बात अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड ये करना है कि दिस मेमोरी वर्ड, यू कंसीडर दिस एज ए वर्ड, this word will have two parts. One is called the address, fixed length address, and the other is called word length or word size. Word length. या बोलो आप word size. This address is fixed length binary address. Fixed length binary address. ठीक है? This binary address is always measured in bits. Is always measured in bits. Of course, bytes में भी बोल सकते हो आप, लेकिन bits में general convention है. Word length generally is also in either bits or bytes. Practically, it is in bytes. 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte, something like that. Or you can even just have 1 byte is 8 bits. So if I say my word is 16-bit word, आप बोलोगे 16-bit word बोलिए या फिर 2 byte word बोलिए. Either way. So boys and girls, if here I addressing always, the next important point is addressing always starts from 0. 0, 1, 2, 3, so on it goes. So these are addresses. These are addresses. If I say that there are total number of words as capital N, that is called total capacity of memory, total number of words. Prakash, word length will be given to us. How much is the word length will be given to us? 16-bit word length, 24-bit word length, 8-bit word length, that will be given to us. Okay? So these are addresses, word length and number of words. Say for example, if I indicate my word length as M bits, word length let us say is M bits, then how do you represent memory? How do you specify memory? Memory specification. Memory is specified as follows. Memory specification. Capital N by small m. Matlab how many words are there and what is the size of each word? What is the size of each word? How many words are there and what is the size of each word? So this specify the memory, or this is how generally we measure memory or we indicate memory. And for further specification we say word length is M. So boys and girls, I would like to emphasize that there are 3 parameters here: word length, number of words, and this is word length is already there. Address bits. Address bits is N. So there are 3 parameters here: small n, capital N, and small m. Address is small n bits. Number of words are capital N. Word length is small m. Like for example, I can say, I am having memory. First example you consider. Let's say the number of words are 128 and the word length is 16 bits. इस तरीके से दिया जाएगा problem. There were some questions asked based on this concept. So boys and girls, please follow carefully. Then you may ask how many bits of address is needed. There are 128 words. Look at that. There are 128 words. So how many bits of address is needed? 7 bits. Why? 2 power 7 is 128. So each word of size 16 bits. हर word की अपनी size 16 bits है बच्चों. Every word is of size 16 bits. 16 bits alternatively is 2 bytes. So same capacity, same memory, if you try to see in terms of bytes, I would say number of capacity in terms of bytes is nothing but 128 into 2 bytes. 256 bytes. B, capital B is bytes. ऐसे आप measure करोगे. So memory can be specified either in terms of words or in terms of bytes. Practical unit of measure is bytes. आप हमेशा memory को practically bytes में ही measure करोगे. You measure it always in bytes. Okay. So that means from here I can say that simply the relationship between capital N and small n, if I try to say, the capital N is nothing but always 2 power n words. And the value of n from here is nothing but log of n to base 2 bits.
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए. The basic organization of memory is based on this. Yes, good evening, Tech and Games. Krishna Sharma, good evening. Krishan Sharma. So this is the philosophy. Capital N is equal to 2 power n, small n is equal to log n to base 2. We can take some more problems. We can take some more problems on this just for reference. फिर उसके बाद आप बताइए अपना comfort level, whether you are comfortable or not. Like for example, I'm addressing a memory of size with 24 bits of address. And the width of each word is 32 bits. चलिए आंसर दीजिएगा बच्चों. I'm having a memory referred with 24 bits of address and each word is 32 bits in size. So 24 bits of address आप यूज कर रहे हो 32 bit word select करने के लिए, एक word of size 32 bit select करने के लिए. मेरा आपको क्वेश्चन ये है, what is the capacity of memory in terms of words? In terms of words बताइए कितनी capacity है. Similarly, in terms of bytes, बताइएगा what is the capacity of memory. Come on, do it. I'll give you 2 minutes of time. Simple question to build up your foundation. What is the answer, please? It's not difficult. Come on, boys and girls, you have to tell if you are compatible in memory management. Pooja Gupta, I'm asking what is the capacity of memory in terms of words and in terms of bytes. Pooja Gupta. सुनिएगा, using the formula. कितने वर्ड्स है देखिए, 24 बिट्स ऑफ एड्रेस इज नीडेड टू सेलेक्ट वन वर्ड. तो कितने वर्ड्स लगेंगे? 2 पावर 16, सॉरी 2 पावर 24, 2 पावर 24. इसकी वैल्यू क्या है? 2 पावर 24, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 20. व्हाट इज 2 पावर 4? 16. व्हाट इज 2 पावर 20 मेगा? 16 मेगा वर्ड्स. 16 मेगा वर्ड्स. सही है ना? नंबर ऑफ वर्ड्स आर 2 पावर 24. देखिएगा यहां पर फॉर्मूला, कैपिटल N इज इक्वल टू 2 पावर स्मॉल n. 16 mega words are there. Now observe, each word, one word, let us write, one word is equal to 32 bits. 32 bits कितने bytes होंगे बच्चों? 32 bits होंगे 4 bytes. So therefore 16 mega into 4 bytes. One word is 4 bytes. ये बनेगा 64 megabytes. 64 megabytes. उसी तरह और भी हम क्वेश्चन लेंगे, ए कपल ऑफ क्वेश्चंस. देखिएगा यहां पर, टू मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल. थर्ड क्वेश्चन, आई एम हैविंग ए मेमोरी ऑफ कैपेसिटी 500 GB. 500 GB. What is the length of address? Fourth question here. I'm having a capacity of memory log of Z words to base 2. Memory with log of Z words. What is the length of address? Come on, work out these two problems. Come on, do it. Okay. See here on board, 500 giga
गीगा नीड हाउ मेनी बिट? स्ट्रेट अवे 30. 500 के लिए कितने लगेंगे? 9 बिट्स. So therefore 39 bits. Boys and girls, here I'm assuming that you know the factors. You know the factors. ये मान के मैं चल रहा हूं कि you have the understanding 2 power 10 is 1k. 2 power 10 की वैल्यू है 1024. These are almost 10 power 3. तो इसीलिए हम इसे जनरली कहते हैं 1k. ठीक है. 2 power 20 is 10 power 6. इसे हम बोलेंगे 1 मेगा. 2 power 30 10 power 9 इसे हम बोलेंगे 1 गीगा. 2 power 40 10 power 12 1 टेरा. 2 power 50 10 power 15 1 पेटा. तो एटलीस्ट पेटा तक रिमेंबर कीजिएगा प्लीज. ठीक है. अगर वर्ड मेमोरी में स्पेसिफाइड है तो यू शुड नो व्हाट इज वर्ड साइज. अगर इफ आई से दैट वन वर्ड इज इक्वल टू 4 bytes, then how many bytes will it have? How many words will it have? Then the capacity of memory will become 500 gigabytes divided by 4 bytes. ये आपकी कैपेसिटी ऑफ मेमोरी बनेगी, वर्ड्स में बनेगी. दिस विल बी द नंबर ऑफ वर्ड्स. अंडरस्टैंड करना होगा. If I divide total number of bytes by word size in bytes, I will get number of words. वासे उंतवाले, गुड इवनिंग. उंतवाले. ये उंतवाले क्या है भाई? उंतवाले मीन्स इज इट ए प्लेस? इज इट ए प्लेस? इन विच प्लेस? इन विच स्टेट? रक्षित, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है मतलब यह है कि आपका बेसिक फाउंडेशन मेमोरी मैनेजमेंट का नहीं है. ये चीज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, क्या नहीं जा सकता मैं इनफैक्ट. ओके, इट इज अ सरनेम, नो प्रॉब्लम. सुनिए रक्षित, ये फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है. ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है मतलब आपने डिजिटल नहीं पढ़ा है, आपने लॉजिक डिजाइन नहीं पढ़ा है, आपने शायद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के भी बेसिक फाउंडेशन नहीं पढ़ा है. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली इसे आना चाहिए समझने के लिए. मैं इससे ज़्यादा और आगे फास्ट ट्रैक कोर्स में नहीं जा सकता क्योंकि कंस्ट्रेंट है. मेरा जो रेगुलर कोर्स होता है उसमें जनरली ये टॉपिक खुद 1.5 आवर की होती है मेरी. ये टॉपिक ओनली ऑन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ मेमोरी. 1.5 hour I used to discuss, 1.5, sometime 2 hours. It's a concept of digital electronics, Rakshit. So I cannot explain beyond this. इससे ज़्यादा मैं और डिटेल फास्ट ट्रैक में नहीं जा सकता. राइट? आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट से समझना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा क्लैरिटी के साथ. ओके. ये चीजें आपको नेटवर्क्स में भी यूज होंगी, ये चीजें सीओ में भी यूज होंगी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं. ओके. टेक एंड गेम्स पेजिंग हम डिस्कस करेंगे आज, नो प्रॉब्लम. प्लीज हैव अ लुक. देखिएगा लॉग है, इसका आंसर बताइएगा. देखेगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा. प्रॉब्लम नंबर 4 का आंसर बताइए. जनरली पीपल मेक मिस्टेक हियर. कवन, आर्यन गुप्ता, ललित कश्यप, शुभम जोशी, टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. टेक एंड गेम्स, टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. वेरी सिंपल क्वेश्चन. Yes, that's correct. Log of z is number of words. बच्चों, log of z is number of words. तो number of words जब भी होंगे आप उसका log लेना होगा. मतलब you have to take log of this. Log of log z to base 2. This is your answer. Bits. यहां पर भी हम log लिए थे. log लेने से आपके 39 बिट्स बने. उसी तरह ही पोरस प्रजापति, z इज नॉट करेक्ट आंसर. यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, z बोलेंगे, z इज रॉन्ग. log z इज द नंबर ऑफ बिट्स. कृष्ण शर्मा, करेक्ट है ना बात? हंस रहे हो आप? बिल्कुल हंसी की बात है, यही मिस्टेक करते हैं बच्चे. राइट? सो दैट्स द पॉइंट. तो चलिए बच्चों, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ मेमोरी हमने देखा. अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे मेमोरी इंटरफेसिंग टू सीपीयू, जहां पर एक कपल ऑफ क्वेश्चन जो जनरली मैं कह रहा हूं कि मे बी this time or next time perhaps you may expect some questions or problems. इसीलिए हम यहाँ पर लेके आएंगे टॉपिक को. देखिएगा, यहाँ पर हम देखेंगे
memory chips, sorry. So we say memory chips. So here basically RAM chip. C on board. How do you typically visualize memory as, RAM chip as? Maybe you can see it like this. This is called 128 by 8 RAM chip. Okay, look at this. Generally, what are the important control lines? We will have a control line by name chip select 1, CS1, chip select 1, CS2, chip select 2. This concept is an overlapping concept. This also comes under the subject of computer organization and also operating system. Read control line, write control line, और एक बस होगी जिसका नाम होगा एड्रेस बस. The size of this address bus depends on the number of words. यहाँ पर हमारे पास 128 words है, so therefore the size of the address bus is 7 bits. क्यों? 2 power 7 is 128. हमें 7 bits लगेंगे एक word select करने के लिए. और फिर ये चिप की अपनी साइज होगी डेटा बस, बाईडायरेक्शनल डेटा बस, 8 bit बाईडायरेक्शनल डेटा बस, बाईडायरेक्शनल डेटा बस. So for the chip to be operational, जब आप कोई परफॉर्म करोगे रीड और राइट ऑपरेशन, तो आप कैसे करोगे? CS1 को 1 रखेंगे, CS2 को 0 बनाएंगे. अगर आप रीड करना चाहो तो रीड सिग्नल को 1 करोगे, राइट सिग्नल 0 रहेगा. 7 बिट एड्रेस जो भी आप सेलेक्ट करोगे, दैट इज गोइंग टू सेलेक्ट वन ऑफ द चिप, वन ऑफ द वर्ड, एंड दैट आउटपुट विल गो ऑन टू द 8 बिट डेटा बस. फिर ये 8 बिट डेटा बस जो आउटपुट आया है, दैट विल गो इन टू रजिस्टर ऑफ CPU. ये कोई रजिस्टर है, शायद हो सकता है ये एक्यूमुलेटर हो या फिर कोई और रजिस्टर हो जहां पर आपका ऑपरेंड आया है या इंस्ट्रक्शन आया है. देन यू कैन कंटिन्यू. सो दैट्स हाउ यू परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशंस. तो बच्चों, बेस्ड ऑन दिस आर्किटेक्चर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो है, आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रॉब्लम हियर, व्हिच इज अ पोटेंशियल गेट क्वेश्चन इन फ्यूचर. पहले 2021 में भी पूछा गया था, शायद अब भी पूछा जाए. दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, लुक एट द प्रॉब्लम डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ higher capacity memory using lower denomination chips. ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बच्चों. ये प्रैक्टिकल वी एनकाउंटर इट इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डेस्कटॉप है या लैपटॉप है जिसपे 1 GB रैम है and I want to make it 4 GB. तो दो प्रोसीजर्स है. Either I can go to the market and purchase a 4 GB RAM SIM and remove the old one and plug the new one. ये एक प्रोसीजर है. अगर वो प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करोगे तो सेकेंड अप्रोच ये होगा कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज हायर कैपेसिटी 4 GB फ्रॉम यूजिंग लोअर डिनोमिनेशन 1 GB चिप्स. तो आपने 4 1 GB चिप्स लोगे, 1 1 1 1 + 1 + 1 + 1, तो आपके रैम, आपके मदरबोर्ड पे एक्सटेंशन स्लॉट्स रहेंगे, वहां पर आप प्लग करोगे 4 चिप्स. दैट इज कॉल्ड organization of higher capacity memory using lower denomination chips. मतलब आप 4 GB RAM बना रहे हो using 1 GB RAM chips. How many? 4. इसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा. तो ये इंटरफेसिंग अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है. तो एक सिंपल प्रॉब्लम लेकर हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद मैं कपल ऑफ गेट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा. तो क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा आपको, यूजिंग 128 by 8 RAM chip, we wish to organize memory of size, let us say 258. Simple question. 256 bytes. देखिएगा, using 128 by 8. 128 by 8 is 128 byte. Because 8 bits is one word. 128 byte. I want to organize memory of capacity 256 bytes. तो देखिएगा, we are increasing the number of words from 128 to 256. 256 bytes means 256 by 8. Horizontally we are not increasing. Word length is same in both memory chip and also memory organized. तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा how many chips are needed. कितने चिप्स लगेंगे? 2 चिप्स लगेंगे.
because 128 plus 128 become 256. तो हमें यहां देखना है कि वो 250 दो चिप्स जो आप लोगे वो कैसे इंटरफेस होगे सीपीयू से. हाउ इज इट गोइंग टू गेट इंटरफेस विद सीपीयू, दैट वी हैव टू सी. आई विल शो इट हियर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ब्लॉक डायग्राम. बच्चों प्लीज फॉलो. इमेजिन दिस इज द सीपीयू and let's say this is the first RAM chip and the second RAM chip. So the first one 128 by 8, the second chip 128 by 8. It will have a bidirectional data bus, both of them. और हर एक के अपने कंट्रोल लाइंस रहेंगे CS1, CS2, R, W, AD7, CS1, CS2, R, W, AD7. वही कंट्रोल लाइन जो हमने डिस्कस किया वो यहां पर भी अवेलेबल रहेंगे. देखिएगा. So let me name the chips, control lines CS1, CS2 prime, R, W, AD7, CS1, CS2 prime, R, W, AD7. तो मान लीजिए this is your extension slots and we have plugged these two chips and this is your processor CPU. तो अब सीपीयू के कंट्रोल लाइन से हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे देखिएगा. तो सीपीयू की अपनी डेटा बस होगी. सो विल कनेक्ट कॉमन दैट डेटा बस टू द आउटपुट ऑफ बोथ, क्योंकि जो आउटपुट आएगा आइदर इट विल कम फ्रॉम द चिप 1 और चिप 2. तो दैट विल गो इनटू द डेटा बस ऑफ द प्रोसेसर. ठीक है, ये हो गया आपकी डेटा बस. चलिए अब कनेक्शंस कैसे करेंगे. यहां पर हम CS2 नहीं यूज कर रहे हैं. CS2 विल ऑलवेज बी ग्राउंड लेवल 0. सो देयरफॉर आई कनेक्ट कॉमन टू ऑल द चिप्स. Right, CS2 connected. CS2 is actually used to distinguish between RAM and ROM selection. चूंकि हम यहाँ पर RAM यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ RAM है, तो therefore it is always grounded to 0. 0 prime become 1, so chip is always enabled. So बच्चों यहाँ पर आपको फिर से emphasize कर रहा हूँ, this is RAM. ROM नहीं है. Processor will have read and write line. So read and write line हम ले लेंगे. That will be connected common to all the chips. ऐसे. राइट लाइन उसी तरह कॉमन जाएगी यहां पर ऐसा. अब यहां पर बच्चों आपको जो बात समझने की है वो ये है कि एड्रेसिंग काफी इंपॉर्टेंट है. एड्रेसिंग काफी इंपॉर्टेंट है. सुनिएगा, गौर से सुनिएगा. एड्रेसिंग कैसे करोगे. तो बच्चों एक बात हमेशा यहां पर याद रख लीजिएगा कि ये जो मेमोरी है, टोटल मेमोरी जो है, दिस टोटल मेमोरी इज 256 बाइट्स. 128 प्लस 128. तो प्रोसेसर विल सी दिस मेमोरी as 256 bytes. ठीक है ना, 256 bytes. So these 256 bytes are distributed in the two memories as follows. First memory will have words in the range from 0 to 127. Second memory will have words from 128 to 255. इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे. Right? So that means to access 256 bytes of memory, कितने bits of address हमें लगेगा? 8 bits of address लगेगा. 8 bits. ये 8 bits of address में से 7 bits should go common to all the chips, both the chips. 7 bits. क्यों? Chip has 128 bytes, 128 words. So we are going to bifurcate this into two parts. 7 bits for chips, for word select in the chip. Word select. एक word select करने के लिए 7 bits. बाकी का बचा 1 bit. So using this most significant 1 bit, listen to me carefully. Using this most significant 1 bit, we have to select one of the chips. और जो चिप सेलेक्ट होगी, रिमेनिंग 7 बिट्स विल सेलेक्ट अ वर्ड विद इन दैट चिप. मतलब इफ यू आर सेलेक्टिंग द फर्स्ट चिप विद दिस 1 बिट, देन द रिमेनिंग 7 बिट्स विल सेलेक्ट वन वर्ड विद इन दैट. अगर नहीं, विद दिस 1 बिट वी आर सेलेक्टिंग द सेकंड चिप, देन दिस रिमेनिंग 7 बिट्स विल सेलेक्ट विद इट. तो मतलब एड्रेसिंग अगर आप जब पूछो तो यहां पर हम ऐसे बनाएंगे. सुनिएगा. सो प्रोसेसर विल जनरेट एड्रेस एज फॉलोज. 8 बिट्स एड्रेस, दिस एड्रेस. Out of these 8 bits, 7 bits will go common to both the chips. 7 bits will go common to both the chips. अब यहां मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना है. सुनिएगा. Yes, Rakshit, that is right. 128 is capital N, 8 is small m. That's right. 8 bit is word length. That is correct. बच्चों, आपको मैं क्वेश्चन यहां पर ये पूछ रहा हूं. देखिएगा. मैंने कहा एट ए टाइम यू हैव टू सेलेक्ट ए वर्ड फ्रॉम आइदर चिप 1 और चिप 2. हमें चिप 1 या चिप 2 से वर्ड सेलेक्ट करना है थ्रू दिस 1 बिट, 8 बिट लास्ट बिट MSB.
तो ये सेलेक्ट करने के लिए चिप सेलेक्ट के लिए 1 बिट से एक चिप सेलेक्ट करना है, तो मुझे कौन सा डिजिटल फंक्शन यूज करना पड़ेगा? व्हाट डिजिटल फंक्शन शुड आई यूज? विच कॉम्बिनेशनल सर्किट? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है. दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व 3 थिंग्स: डिजिटल डिजाइन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स. Which combinational circuit या digital function will be used to make this selection possible? नहीं multiplexer नहीं. Shubham Joshi and Tech and Games, it is not multiplexer. Which combinational circuit or digital function will be used to make this selection? देखिएगा, एक बिट आ रहा है, उसे either select first chip or second chip. Simple concept, not flip flop. Flip flop is a unit for making digital circuits, sequential circuits. बोलिएगा विच डिजिटल फंक्शन? कृष्ण शर्मा ने अभी डी नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए बच्चों. नॉट गेट. ठीक है, नॉट गेट एक सिंपल फंक्शन हो सकता है, इन्वर्टर भी हो सकता है बिकॉज 1 बिट है, लेकिन एक्चुअल फंक्शन जो चलेगा उसका नाम है डीमक्स. ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर. या फिर हम बोलोगे ए डिकोडर, ए सिंपल डिकोडर. A decoder is needed. क्या साइज का डिकोडर रहेगा? 1/2 size. It is going to receive 1 bit input and it will have 2 outputs. If the value of the bit is 0, this output line will be selected. If the value of the bit is 1, this output line will be selected. तो मतलब if this output line is selected, it should select chip select 1. If this is selected, it should select this chip select 2. That's how the connection is made. So this is called the interconnection of memory chips to the CPU for organization of higher capacity memory using lower denomination chips. ये है concept. Based on this concept, बच्चों, there were questions asked in earlier paper. थोड़ी देर में मैं शायद क्वेश्चन लेके आऊंगा. एक सिंपल बैकग्राउंड है, देखिएगा, ये क्वेश्चन है. ये देखेंगे या ये देखेंगे? ठीक है, दोनों भी देख सकते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन पहले देखेंगे. रीड दिस क्वेश्चन. इट्स अ गेट क्वेश्चन 2021 है या उससे पहले का है, आई डोंट रिमेंबर. लेट अस नॉट वरी अबाउट द इयर्स. आई थिंक दिस इज नॉट 2021. जस्ट स्ट्राइक इट ऑफ. पिछला क्वेश्चन जो है वो है 2021 का. दिस गेट 2021. This is something like 2009, I suppose. You can just verify that. I'll put it as a star. You can verify it. Come on, read the question. Options are there. Make an attempt to work out. देखेंगे कौन सही बताएगा आंसर. कृष्ण शर्मा इज करेक्ट, 64. Porosh Prajapati, it is not 8. Option A, no. See, given chip is 32K by 1. Listen to me. Given chip is 32K by 1. So if I 32K by 1 and I want memory of capacity 256 kilobytes. 256 kilobytes means 256K into 8. ये ऑर्गेनाइजेशन में आपने गौर करना है कि देखिएगा, वर्ड लेंथ इज 8 बिट्स इन मेमोरी दैट यू वांट एंड द वर्ड लेंथ इन द चिप इज 1 बिट. आपके चिप में 1 बिट वर्ड लेंथ है और जो मेमोरी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसमें 8 बिट वर्ड है. मतलब आपने हॉरिजॉन्टली इंक्रीज करना है साइज फ्रॉम 1 to 8. मतलब हॉरिजॉन्टली कितने चिप्स लगेंगे आपको टू मेक ए वर्ड लेंथ ऑफ 8 बिट्स? 8 चिप्स लगेंगे. सो आई विल हैव टू टेक 8 चिप्स लाइक दिस. I will have to take 8 chips like this. Chip 1, chip 2, फिर इसी तरह chip 8. ठीक है? So this is 32K by 1. This next chip 32K by 1.
This next chip 32K by 1. Chip 1, chip 2, chip 8. 1, 2, 8. हर एक का ये 1 bit output रहेगा, हर एक का 1 bit output रहेगा. That's why I will get an 8 bit output. 8 bit output. तो बच्चों यहां पर देखने की बात यह है, if I'm taking one row of 8 chips, 1, 2, 3 in horizontal direction, 8 chips, I'm getting a capacity of memory 32K by 8, 32 kilobytes. तो यहां पे equation बनाएंगे. We'll pen down the equation. If I take one row having 8 chips of what size? 32K by 1. I'm able to organize memory of capacity 32 kilobytes. ये बात समझना है. फिर से कह रहा हूं. If I'm taking 8 chips in a row, right, of size 32K by 1, I'm able to push a memory of size 32 kilobytes. ठीक है ना? तो एक रो having 8 chips is giving you 32 kilobytes. हमें कितने किलोबाइट्स चाहिए? हमें चाहिए 256 किलोबाइट्स. कितने रोज लगेंगे? रोज. नंबर ऑफ चिप्स नहीं, रोज. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा. ये एक मैट्रिक्स की ऑर्गेनाइजेशन रहेगा. तो डिवाइड इट. 256 किलोबाइट्स डिवाइडेड बाय 32 किलोबाइट्स. दिस विल गिव यू नंबर ऑफ रोज. तो कितना बनेगा ये? 256 is 2 power 8, this 2 power 5, 2 power 3. 8 rows. I need 8 rows. So I need a matrix बच्चों. इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी है. Having 8 rows, 8 chips in each row. So total number of chips of size 32K by 1 कितने लगे? 1 row में 8 chips है, 8 rows में कितने रहे? 64. So the correct answer is 64. Therefore the correct answer is 64. ठीक है ना? So ऐसे टाइप का क्वेश्चन you can expect in future gate exams, So these are earlier gate question. उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं as a homework. You try. It was asking gate 2021. It's a mix of all the three concepts which I said: digital design, operating system, and computer organization. RAM chip organization. Some people say in CO, some people study in operating system, and that involves some. देखिएगा यहाँ पर. The question is asked on number of decoders, 2x4 decoders with enable line. तो it involves digital concepts also. तो एज ए होमवर्क कीजिएगा. अगर आपको मुश्किल हो रही है तो मुझे बोलिए. आई विल वर्क आउट इन द लास्ट क्लास ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ के ये डिस्कस करना आए हैं बच्चों. 2 थिंग्स आई वांटेड टू डिस्कस. फंक्शंस एंड गोल्स ऑफ मेमोरी मैनेजर. फंक्शंस एंड गोल्स ऑफ मेमोरी मैनेजर. ठीक है, ये मिटना नहीं सकता. ये आई निकाल दीजिए, यहाँ पर आई नहीं है. फंक्शंस एंड गोल्स ऑफ मेमोरी मैनेजर. ओके, देखेंगे इससे सेलेक्ट होता है या नहीं. पूरा सेलेक्ट हो रहा है. ठीक है, चलिए. सो रिमूव दिस आई. मेमोरी मैनेजर. That's an important one to understand memory management techniques. Yes, good evening. The important functions of memory manager includes allocation of memory space. Second important function is protection. Particularly in multi-programmed operating system environment, protection is a very important function. What is protection? Shortly we'll discuss. फिर उसके बाद रहेगा address translation. Particularly in modern memory management techniques, address translation is a must function. हमने पढ़ा था
what kind of architectural support is needed for implementing a multi-programmed OS. तो multi-programmed operating system में address translation जरूर होगा, converting logical address to physical address. फिर इसके बाद है free space management. Free space management. फिर इसके बाद है deallocation. Deallocate the area of memory. To carry out these functions, we should have certain goals. The important goals is optimal utilization of memory. Optimal utilization of memory. That means memory should not be wasted, right? Less wastage. Generally, we use the word wastage, लेकिन उसका technical term है actually fragmentation. मतलब हम ये बोलेंगे good technique is one that has lower levels of fragmentation. Fragmentation should be less. ठीक है? Can anybody tell me how many types of fragmentation do we know or do we have? बोलिएगा. Fragmentation is of two types. What are they? What are they? Name बोलिए. What are the names of the fragmentation? Internal and external. Very good. Internal and external. Internal and external. And then the second important goal of memory manager includes to manage the execution of a bigger program in small amount of memory through virtual memory concept or through overlays. So in respect of this, we say that memory management techniques are classified into two types. Techniques सुनिएगा. Techniques. Techniques of memory management. Right, broadly classified into two types, contiguous and non-contiguous. Contiguous and non-contiguous. Two types of techniques. Contiguous is like centralized allocation. Centralized का मतलब ये है कि the whole program will be at one place. Non-contiguous is like distributed approach. Distributed. Nishu Kumar is saying PYQ series कब आएगा? देखिएगा, last year PYQ series we have already done. You can see those same videos. Where is the necessity to again do the same PYQs? Nishu Kumar, you can check those videos of PYQ series of the last time. So why should we have again repetition? So non-contiguous. And within contiguous, the important memory management techniques include like partitions. Then you have some old techniques like overlays. And within partition, the important predominant techniques are fixed partitions and variable partitions, जो आपने पढ़ा होगा, fixed and variable. So from examination perspective, ये काफी important है. And under non-contiguous domain, we have important techniques like paging and different forms of paging. Then we have segmentation. And then you have segmented paging as an integrated approach. Broadly, these are the two, paging and segmentation. Okay? So whether you go for contiguous and non-contiguous, protection is a very important function. What is the need for protection? You can see from this diagram. What is the need for protection? You can see from this diagram. So if you look at the memory layout, memory is divided into two parts. One is called the system area and the other is called the user area. Or user space. So this user area or user space is meant for storing processes either contiguously or non-contiguously. अब ये contiguous की बात है यहाँ पर.
So maybe this is what is called a partition, where I have loaded this process, which will have its base value and base plus limit. Limit means the size of it. Like it is going from 300040 to 420940. तो ये difference आप निकाल के आप उसका limit बोल सकते हो. Yes. So protection का मतलब ये है बच्चों, this particular process loaded in this address space should not interfere with other process areas, other address spaces. That is called protection. So simple hardware needed for ensuring protection is base limit registers and some magnitude comparator, and the cross checking can be done by means of a simple diagram showing the hardware support for protection. Process generating the address on the CPU will be compared with base value. If it is greater than or equal to base, it is allowed. If it is less than, it is not, trap. Otherwise, then we check base plus limit is within the, after adding the offset D, or maybe the total address should be less than base plus limit. If it is less than, it is allowed. If it is not, it is a trap. So this is how a simple protection mechanism, protection hardware can be used for ensuring protection, to make sure that the process is accessing a valid address, not an invalid address. Okay? So a simple hardware support. Then this concept of address binding, you can read from them. Address binding का मतलब ये है कि the association of program instructions and data units to memory locations is called address binding. तो मतलब आप कौन से memory locations पर आपने instructions और data units को bind कर रहे हो, associate कर रहे हो. So that can be decided at compile time or load time or run time. Compile time or load time matlab this will be done during compilation time, this will be done during load time. These two schemes are called static address binding schemes. क्योंकि एक बार आप associate करने से change नहीं कर सकते हो addresses. The program has to be loaded in the same area which was decided by compiler or loader. You cannot change it. Therefore, it is static. ठीक है? So in the case of static address binding scheme, the address generated by the CPU will be same. Physical and logical address में कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों same रहेंगे. Compile time or load time. Why? Because it is static. On the other hand, dynamic address binding, runtime address binding, देखिएगा ये execution time और runtime address binding scheme में ये provision है कि you can relocate the program from one area of memory to another area of memory during execution. वो है runtime. That's why it is called dynamic. So this address binding is dynamic. इसीलिए हम dynamic कहते हैं क्योंकि run time पर आप अपने program को move कर सकते हो from one area to another area में. तो यहाँ पर relocatable addresses generate करेगा compiler, which can get binded to physical addresses decided by loader at runtime, and further it can get changed. So this is the most flexible address binding scheme. And यहाँ पर runtime address binding scheme में basically you will have physical and logical addresses different. So I need address translation mechanism in this approach. It may be contiguous or it may be non-contiguous. चलिए. Then finally, the concept of logical address space and physical address space, you know it perhaps. The address generated by CPU is called virtual or logical address, and the address seen by the memory unit is called physical address, and the corresponding address spaces mean the set of instructions accessible with that logical address is called logical address space, and the corresponding addresses accessible with the given physical address, that is called physical address space. ठीक है? So that is the concept of it. So देखिएगा, this is the address generated by CPU logical. MMU is memory management unit, like page table or maybe base register or maybe relocation register. These are all examples of MMU. So job of MMU is basically to convert the generated logical address to physical address. Converting logical address to physical address. So that is the philosophy. ये तो खैर ठीक है. Concept of dynamic loading linking you are already familiar with. Loading means loading of program from disk to memory, which can be done before runtime or during runtime. अगर आप before runtime में load करोगे तो static loading. During runtime अगर आप load कर रहे हो memory management technique में in the form of program portions of program, तो उसे dynamic addressing बोलेंगे, dynamic loading बोलेंगे. उसी तरह linking is resolving unresolved or external references. It can be done in a static mode or dynamic mode. You have static linking, you have dynamic linking. The major trade-off जो रहेगा dynamic loading or static loading or dynamic linking or static linking में, that is with respect to time and space. Dynamic linking is slow but space efficient. Static linking is fast, right, but space inefficient. So trade-off is always between
Yes, TLB is also part of MMU. TLB is also an example of MMU, S series. Okay, so that is about the memory. Next part is contiguous allocation, important part. We'll browse through and then we'll come to problems. We'll come to numericals on contiguous allocation. फिर उसके बाद हम paging जाएंगे, paging के problem भी discuss कर लेंगे. चलिए. So what happens in contiguous allocation? Let me just brief up here by diagrammatically. So please follow, boys and girls. Let's say this is my memory area. As I said, we are going to divide this into two parts. One is meant for storing operating system. One is meant for storing operating system. Check it. So here I'll store operating system. This is called user area. Now in the case of fixed partitions, we are going to divide this user area into fixed number of partitions of varying sizes, perhaps varying sizes, something like this. Maybe for example, this is 120 KB. Maybe this is 250 KB. Maybe this is 80 KB. Maybe this is 350 KB. And let's say this is 30 KB. Something like this. So matlab this partition can hold a program up to 350K. And this program can hold up to 80K, can hold up to 120K. तो boys and girls, यहाँ पर दो important functions है. Number one, allocation policy. Number two, protection. Protection के लिए हमने already देखा, you can have base and limit registers, and using that, जो diagram मैंने आपको बताया था, with that diagram you can perform address translation. The important point to be discussed here is from where, based on which there were questions in earlier papers, the important point जो है, वो है to concentrate is allocation policies. Partition allocation policies. मतलब जो भी कोई प्रोसेस आएगा, कौन से पार्टीशन में, फ्री पार्टीशन में आप उसे प्लेस करोगे, बिकॉज आई कैन हैव मल्टीपल फ्री पार्टीशंस. तो हमें ऑब्वियसली डिसाइड करना होगा कि कौन से फ्री पार्टीशन में हम प्रोसेस को प्लेस करेंगे. तो फॉर दैट वी हैव स्टैंडर्ड पार्टीशन एलोकेशन पॉलिसीज. चलिए बच्चों बताइएगा, व्हाट आर दे? द स्टैंडर्ड वंस आर फर्स्ट फिट FF. द सेकेंड वन इज बेस्ट फिट BF. The third one is worst fit WF. And the last one is next fit NF. These are the various partition allocation policies. चलिए डिस्कस करेंगे थोड़ा. फर्स्ट फिट, फर्स्ट फ्री बिग इनफ, मतलब आपने शुरू से सर्च करना है टू फाइंड ए फ्री बिग इनफ पार्टीशन, दैट इज फर्स्ट फिट. हम साइज नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इतना देखेंगे, कैन वी अकोमोडेट द प्रोसेस और नॉट, दैट्स इट. इफ यू कैन अकोमोडेट द प्रोसेस वी एलोकेट इट. फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है बेस्ट फिट. स्मॉलेस्ट फ्री बिग इनफ पार्टीशन इज बेस्ट फिट. मतलब सारे फ्री पार्टीशन में जो भी पार्टीशन स्मॉलेस्ट है और फ्री है और बिग इनफ है टू अकोमोडेट द प्रोसेस वी प्लेस इट. नेक्स्ट फिट, सॉरी बेस्ट फिट. वर्स्ट फिट, लार्जेस्ट फ्री अवेलेबल पार्टीशन इज वर्स्ट फिट. सबसे बड़ा जो फ्री पार्टीशन है हम उसमें प्लेस करेंगे प्रोसेस को, दैट इज वर्स्ट फिट. फिर उसके बाद है नेक्स्ट फिट. नेक्स्ट फिट विल वर्क लाइक फर्स्ट फिट एक्सेप्ट दैट जो आपकी सर्च होगी वो शुरू से नहीं होगी, फर्स्ट पार्टीशन से नहीं होगी, बट फ्रॉम द प्लेस वेयर लास्ट एलोकेशन वाज मेड. अगर मान लीजिए मेरा लास्ट एलोकेशन यहाँ था, तो नेक्स्ट फिट मैं नेक्स्ट पार्टीशन से सर्च करूंगा टू ऑप्टिमाइज टाइम, परहैप्स, मे बी इन सम केसेस. सो नेक्स्ट फिट वर्किंग लाइक फर्स्ट फिट, start the search from not from the beginning but from the place where last allocation was made, that is next. So next free available partition from where last allocation was made is next bit. बिल्कुल सही बात है महेश्वर. So that is next bit. तो यहां पर अगर आप गौर करोगे इसका परफॉर्मेंस, so what are the issues that we can have with fixed partitions? The various issues that we can have is we may have internal fragmentation. It may suffer from internal fragmentation. क्या external fragmentation होगा यहाँ पर? External fragmentation नहीं होगा. There is no scope for it. Degree of multi-programming क्या होगी? Limited रहेगी. Degree of multi-programming is limited. Maximum process size runnable, that is also limited. Which allocation policy should be performing better? Best fit, because of less internal fragmentation. ये है performance of
fixed partitions. To overcome these problems of fixed partitions, we can think of going in for something called dynamic partitioning. Dynamic partitioning. या आप बोलो वेरिएबल पार्टीशंस. मतलब यहां पर पार्टीशंस आप फिक्स्ड स्टैटिकली क्रिएट नहीं करोगे. The partition that get created will be dynamic in nature. मतलब initially we'll have one free hole. Say for example I receive a new process of size 85 kb. हम क्या करेंगे? Dynamically we'll create one partition of size 85 kb and we'll place the process P1. फिर next process आया P2, let us say 154k, 155k. We'll create another partition, put P2 there, exactly of size 155 kb. Next process P3 comes of size 25k. We'll create one partition of size 25 kb. Next another process comes P4 of size, let us say 320k. Then we create a new partition of size 320k and place it. So like that it goes. So initially we have no partitions. Now we have got 4 partitions and 1 free hole. Now over a period of time when scheduling gets, when the processes get scheduled, some processes may complete. Imagine this complete, then later this complete, or in some order they complete. So I can have one free hole here, another free hole here, another free hole. So point is, when I have multiple free holes available, so कौन सा free hole में हम process को accommodate करेंगे? That is again decided by same partition allocation policies. First fit, best fit, next fit and worst fit. Same policy रहेगी, same ideology रहेगी for allocation of the process here also. ठीक है? Except that यहाँ पर आपके पास holes है, we can dynamically create the holes. Second important point I would like to tell you that adjacent free holes, मान लीजिए these two processes got completed, ये दोनों को हम combine करके एक free hole बना देंगे. So here that is called coalescing, which is automatically done. मतलब two adjacent free holes are automatically combined into one. That process is called coalescing, not compaction. Compaction is for non-contiguous free holes. This is for adjacent free holes. The coalescing is always automatic. तो बच्चों अगर इसका performance अगर आप देखोगे, performance of this, so can we have, is there any scope of having internal fragmentation? By and large, in general, there is no internal fragmentation. Is there any scope of having external fragmentation? हाँ, external fragmentation very much हो सकता है. कैसे होगा? अगर यहाँ पर कोई एक free hole है, यहाँ पर बीच में कोई एक free hole है और यहाँ पर कोई एक free hole है, तो I can have 3 free holes non-contiguously, which may not be sufficient to accommodate a process. So, but put together the whole total free space may be much higher than the process size. तो मतलब आपकी memory straight away सीधी बात है कि waste हो रही है. ठीक है ना? So put together all the 3 may be much greater than 3 free holes may be much greater than the size of process. लेकिन एक कोई free hole cannot accommodate the process. So that is what is called fragmentation external to the partitions. So that's why it is called external fragmentation. Degree of multiprogramming logically will be better, flexible रहेगी. Maximum process size runnable भी flexible रहेगा. तो मतलब इसके काफी अच्छे एडवांटेजेस है. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम जो है यहाँ पर वो है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन इन वेरिएबल पार्टीशंस. चलिए बोलिएगा, व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन? देखेंगे कौन बताएगा. व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन? बच्चों बताइए. What are the solutions for external fragmentation? Yes, correct, Saksham. One is compaction. Compaction is bringing all free holes at one end and creating a big free hole, a big free chunk. Or it is also called defragmentation. It is also called defragmentation. Okay. And the other solution for it is go for non-contiguous. That is one of the reasons for having non-contiguous techniques like paging. So primarily the basic objective of paging आप बोलोगे is to prevent the problem of external fragmentation happening in fixed partitions, partition techniques. ये है about the performance of partitions.
ठीक है, तो यही डिस्कशन है यहाँ पर। वेरिएबल पार्टीशन का एग्जाम्पल है, बाद में देख लीजिएगा प्लीज। फ्रैगमेंटेशन के बारे में डिस्कशन है, आप देख लीजिएगा। Before I come to paging, I would like to take up some basic questions on this discussion that we made. चलिए, answer this first question. कुछ questions workout करेंगे, so that you can have some basic understanding. चलिए, tell me the answer for this problem. Simple question है, first question is very simple. ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सिंपल आंसर है। चेक इट। Capacity memory is defined by number of words and multiplied by the number of bits per word. So 4K need 12 bits, 16 bit is word size. So answer बनेगा straight away option C. चलिए next question लेंगे, आंसर कीजिएगा प्लीज। This is an important question. दोनों पॉलिसी से वर्कआउट करके आपने बताना है। दिस इज अ गेट क्वेश्चन, मैंने थोड़ा चेंजेस किए इसमें। Memory having 6 partitions of sizes 200K, 400K, 600K, 500K, 300K, 250K, 6 partitions. There are 4 processes of sizes. Their sizes are given. Check it. So 200K, 400K, 600K, 500K, 300K, and 250K. 6 partitions.
प्रोसेसेस देखिएगा, यहां पर है प्रोसेसेस ऑफ साइज 357K, 210K, 468, 49K। तो पहले आपने डिसाइड करना है, आपने यहां पर बताना है कि यूजिंग फॉस्फेट, using first fit and then using best fit. Where am I going to place these processes? Come on, do it. Using first fit. Using first fit, 357 will go into 400K and 210K will go into using first fit 600K and 468 using first fit will go into 500K. 49K will go into 300K. So the partition which remains unallocated, sorry, 49K will go into 200K. Right? So the unallocated, the partitions which remains unallocated are 300K and 600K using first fit. उसी तरह बेस्ट फिट से वर्कआउट कीजिएगा बच्चों, बेस्ट फिट से वर्कआउट करके बताइएगा। $250K, $200K, $400K, एक मिनट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो गई है। 200, 400, 600, 500, 300, 250. So 400 will go into, 357 will go into 400K, and then 210 will go into obviously 600K. 468 will go into naturally here, right? And then 49K will go here. So 300K and 250K. Using best fit, what happens? Using best fit, देखेंगे 357 will go into naturally 400K. 210K will go into 250K using best fit. 468 will go into 500. 49K will naturally go into 200K. So the partition which remains unallocated, the partitions which remain unallocated, तो देखिएगा 200K यूज हुआ है, 400 यूज हुआ है, 600 नहीं हुआ यूज हुआ है, then 500 is used, 300 is not used. That's it. You can see that. ये बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि विच एलोकेशन पॉलिसी इज बेटर इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, गॉट इट। चलिए, वर्कआउट दिस प्रॉब्लम बॉयज एंड गर्ल्स, इज ऑल्सो PYQ. वर्कआउट दिस।
What is the answer for this? A, B, C, D, both are four options are given. Which allocation policy among first fit and best fit would result in satisfying all these requests? Matlab, you should be able to place all these processes. 300K, 25K, 125K and 50K, all will get placed. All will get placed using this, which policy? First fit. Let us try with first fit. 300K will get placed in 350 using first fit, leaving new freehold of size 50K. 25K using first fit will get placed in 125, leaving 125K. 125 will move here, 50 will move here. So therefore, first fit is satisfied. अब हम देखेंगे बेस्ट फिट से satisfy होगा या ना होगा. 300 in 350 leaving a new freehold of size 25K. फिर यूजिंग बेस्ट फिट 25K यहां बैठेगा, यूजिंग बेस्ट फिट 125 यहां बैठेगा, लीविंग ए न्यू फ्री होल ऑफ साइज 25K. तो यहां एक 25K फ्री होल है, ठीक है, और यहां एक 25K फ्री होल है. तो 50K आपका अकोमोडेट नहीं होगा. सो दैट इज बेस्ट फिट वी कैन नॉट. बेस्ट फिट वी कैन नॉट. सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सी. सॉरी, बी. फर्स्ट फिट बट नॉट बेस्ट फिट. पूजा गुप्ता, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? What is the doubt in the previous question? Tell me. Pooja Gupta, please tell what is the doubt in this question. Rakshit, first fit means start searching from the first partition which is big enough to place the process. First fit. अब देखिएगा, यहां पर मैं अगर फर्स्ट फिट अप्लाई करूं 357 यूजिंग 357 यूजिंग फर्स्ट फिट कैसे करेंगे? यहां पर आएंगे. क्या हम यहां पे अकोमोडेट कर सकते हैं? नो. यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई 400. 210 क्या यहां होगा? नहीं. ये यहां हो सकता था अगर, लेकिन ऑलरेडी इज ऑक्युपाइड विद 357 के. तो हम क्या करेंगे? 210 के पे 210 600 पे आएगा. हाँ, यहां पे आ जाते, यहां पे करेंगे 600. 468 यहां बैठेगा, फिर 49 के यहां बैठेगा. यहां पर ये खाली है पार्टीशन, यहां बैठेगा. तो ये दो पार्टीशन फ्री हो गए. ये है फर्स्ट फिट. टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम. Pooja Gupta, I didn't get your doubt. In first fit, you are just writing 400. What is the meaning of it? What are you trying to say? What are you trying to say? You have written just one line in first fit 400. What is the meaning of it? Why we are accommodating in 400? I told you now, to 357, start searching from the first partition which is big enough to place it. So 400 is big enough. Yes, naturally, we always have to start from beginning. That is why it is called first fit. That is why
हाउ अबाउट नाउ? अब देखिएगा, am I audible now? ओके, ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू. So the primary objective of paging technique, listen to me, the primary objective of paging technique is to prevent the problem of external fragmentation, overcome the problem of external fragmentation. This is essentially non-contiguous allocation technique. So generally as an algorithm, what I say is, generally I tell the students that whenever you are studying paging or any non-contiguous allocation technique, you should always try to study it. As a algorithm having 3 steps. Step 1, we generally say organization of logical address space, which is also called virtual address space. Number 2, organization of physical address space, that is physical memory. Third, organization of memory management unit. Like in paging technique, memory management unit is called page table. Okay. Like in paging, here I just try to summarizingly tell the 3 steps. Follow me carefully. So first, if you talk of what do you call logical or virtual address space, if this is a logical or virtual address space, this is a logical address space or virtual address space. This will be divided into equal size units called pages. So pages are given numbers starting from 0, P0, P1, P2 and so on. This page size, equal size pages. Okay? So based on that, you can have some formulas here with regard to the organization of virtual or logical address space. Number 1, number of pages, I write capital N, number of pages is equal to the size of virtual address space or length of logical address space divided by page size. This will give you the number of pages. फिर उसके बाद number of pages से आपका बनेगा page number, P, page number. This is measured in bits. So this will depend on log of number of pages to base 2, measured in bits. Like if I have 16 pages, I need 4 bits of page number. If I have 32 pages, I need 5 bits, right? 5 bits as page number. Then page size is a power of 2 generally. So therefore page offset, generally measured as D. It is nothing but log of page size to base 2. अगर आपका पेज साइज 4 KB है, आपका पेज ऑफसेट बनेगा 12 bits log of page size. So based on this, we promulgate here, we tell what is the format of the logical or virtual address. So always remember, in paging, the format of logical address or virtual address will have 2 parts, page number and offset. So page number and offset together make the length of logical address. एक simple example ले लेते हैं यहाँ पर, just for confirmation purpose. Suppose if I say my length of logical address is 32 bits. Page size is 8 KB. That means हमारी जो total logical address space है of size 2 power 32, we are dividing into pages of size 8 KB. तो कितने pages बनेंगे? Number of pages is equal to 2 raised to 32 divided by page size 8 KB. 8 KB is 2 power 13. ये बनेगा 2 power 19. ये value है 512K. तो मतलब I will have 512K pages. तो पेज नंबर कितना बना? पेज नंबर विल बी 19 बिट्स. पेज साइज आपका कितना है? 8 KB. मतलब ऑफसेट आपका D कितना हुआ? 13 बिट्स. तो मतलब अगर आप लॉजिकल एड्रेस का फॉर्मेट यहां बनाओगे P एंड D, P इज 19 बिट्स, दिस इज 13 बिट्स, तो टोटल बनेगा 32 बिट्स. वही दिया गया है 32 बिट्स. फिजिकल एड्रेस से ऑफसेट आप पेज साइज से डिटरमिन कर सकते हैं या फ्रेम नंबर डिटरमिन कर सकते हैं. क्लेवर फिनिक्स
क्लेवर फिनिक्स, फिजिकल एड्रेस स्पेस से आप ऑफसेट डिटरमिन कर सकते हो। कैसे? सिंपल पॉइंट है, यहाँ पे बता दूंगा मैं आपको। अभी फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन समझिएगा, उसमें डिस्कस करूंगा मैं। सेकेंड स्टेप ऑफ दिस पेजिंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस। फिजिकल एड्रेस स्पेस अगर आपका ये है, this will be divided into logical units which are called blocks or frames. Blocks or frames. Generally हम frames बोलेंगे या page frames बोलेंगे. So this is frame 0, this is frame 1, this is frame 2, this is so on. General convention is page size is equal to frame size. ये rule है. Size of the page is equal to size of frame. Why? Because one frame should hold one page. Maybe I can store P0 here, P5 here, P10 here. Any page can be stored in any frame. Any page can be stored in any frame. That is why, right? That is why you will have to basically say that frame size is same as page size. Mohammad Maz, if you want to study in detail course, you have to enroll for PW course. Right now I'm teaching at PW. So you'll have to basically enroll for PW. कोई भी बैच पराक्रम है, श्रेष्ठ है, you can join there as per your convenience and learn the full course. ठीक है, चलिए ये है आपका फ्रेम. सो यहाँ पर आपका जो स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ फ्रेम्स, कैपिटल एम वी से नंबर ऑफ फ्रेम्स इज इक्वल टू फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाय फ्रेम साइज. फ्रेम साइज सेम एज पेज साइज. देखिएगा फॉर्मूला. And frame number f will be nothing but log of number of frames to base 2 bits. And page offset is same as frame offset, right? Page offset, let me just write, page offset is equal to frame offset. और आपका addressing format कैसे बनेगा? Addressing format for physical address will have two parts. This physical address, frame number and frame offset. ये D common रहेगा. This D will be common. Please understand. This D in the logical address and physical address will be common. Why? Page size is same as page frame size. ठीक है? हाँ, अब देखिएगा next point which I would like to tell you with regard to this organization is that just somebody was asking that out. Suppose if I have look at this. If I have physical address space, if I want to know what is the page offset or frame offset, you have to see from here. You have to see from here. So from physical address I can find, from physical address space I can find the length of physical address, and if I know the number of frames I can get the value of offset. I can get the value of offset. So I can find, given one parameter you can find always the other parameter. It's always possible. Third जो step है in paging, that is nothing but organization of page table. So here we will write organization of page table और पेज मैप टेबल. हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होगा. समराइजिंगली आपको कह रहा हूं, पेज टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड एज सेट ऑफ एंट्रीज वेयर नंबर ऑफ एंट्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस. नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस. सो हम यहां पे लिख लेंगे आपके कन्वीनियंस के लिए, नंबर ऑफ एंट्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस, इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस. So this entry for page 0, page 1, page 2, page 3 and so on, right? So this is page number index. What does page table entry contain? हम इसे short में लिख रहे हैं page table entry. What does page table entry contain? Page table entry contain the frame number in which, frame number f in which the page is present. This page 3 is present in frame number 1. This is present in frame number 10, something like this. So frame number. तो मतलब जो आपकी पेज टेबल एंट्री साइज रहेगी, दैट विल डिपेंड ऑन द फ्रेम नंबर बिट्स. अगर फ्रेम नंबर 10 बिट्स है तो एंट्री साइज विल बी 10 बिट्स. इट कंटेन अदर इंफॉर्मेशन आल्सो. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल टेक दिस पेज टेबल एंट्री proportional to bytes, nearest to bytes, and based on this we can simply propose a formula for page table size. Page table size is number of pages multiplied by entry size. Number of pages multiplied by entry size will give you the formula of page table size in bytes. This is in bytes. तो ये एक ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन है. डायग्राम से भी आप समझ सकते हो. देखिएगा पेज नंबर ऑफसेट टुगेदर मेक योर लॉजिकल एड्रेस. ठीक है, ये दिस इज द एल्गोरिथम फॉर पेजिंग. एल्गोरिथम फॉर पेजिंग.
This is your processor generating logical address, having page number and offset. Using page number, we index into page table, get the frame number from here, append the offset D. This is your physical address. यहाँ पे है physical address, and then using which you access the corresponding frame to fetch your instruction and data. This is called paging. This page table is in memory. The final content, ये देखा, यहाँ से आप final content access कर रहे हो. Final content. This content can be either instruction of your program, or this can be a data unit of the program. Instruction or data. तो यहाँ पर आपको कहना यह है important point कि with this simple paging technique, जब आप generate कर रहे हो address, using this address you are accessing page table. This page table is kept in memory. अगर memory का access time m हो, तो I need first memory access time m for page table to get translating information, address translation. तो address translation आपको work करेगा with a time overhead of m. इसके बाद finally again you access memory with a time of m for a final content that is either instruction or data. तो मतलब एक instruction के लिए आपको 2 times you have to access memory. तो मतलब आपका total time बनेगा 2m, m plus m, 2m. ठीक है. Entry size has to be given. It will be given or specified. Based on that, you will have to decide. You cannot take it like 2 bytes. Clever Phoenix. You cannot take it statically like 2 bytes. It has to be calculated based on this. देखिए और एक numerical example है यहाँ पे समझने के लिए. देखिएगा please. This is logical memory having only 4 pages. Physical memory having 8 pages, 8 frames. ऐसा हो सकता है. There are 8 frame, 4 pages. So page table में number of entries equal to number of pages. 4 pages है 4. So this is page number. Page number 0 present in frame number 1. Page number 2 present in frame number 3. Page number 1 present in frame number 4. Page number 3 present in frame number 7. ऐसा ये अंडरस्टैंडिंग है. सो दिस योर पेज टेबल. ठीक है. चलिए सेम और एक एग्जांपल है, बाद में देख लीजिएगा, सेम है. यहाँ पर मैं क्लास क्लोज करने से पहले एक दो क्वेश्चंस हम वर्कआउट करेंगे न्यूमेरिकल्स. ठीक है. सो दैट यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. चलिए ये PYQ है, इंटरेस्टिंग PYQ है. मैं चाहूंगा आप वर्कआउट करो फॉर 2 minutes to test your basic concept of understanding. Please work out this problem and let me know the answer. Clever Phoenix, be careful, Clever Phoenix.
36 bits. Okay, let us understand the question. A computer system using paging technique implements an 8 KB page. So let us write down here the data set. Page size 8 KB. तो मतलब यहां से हम इंप्लाई कर सकते हैं पेज ऑफसेट कितना बनेगा 13 बिट्स with a page table size of 224 MB. Look at that, page table size is equal to 24 MB and the page table entry size E is 24 bits. अगर आप bytes में convert करो this will become 3 bytes, 3 into 8. और पेज टेबल साइज का फॉर्मूला है रिमेंबर, अभी हमने देखा n into E इन बाइट्स, ठीक है. सो यहां पर आप वैल्यूज डालोगे, पेज टेबल साइज इज 24 MB, 24 MB is equal to n into E is 3 bytes. So from here I can get the value of capital N, number of pages, is equal to 24 MB divided by 3 bytes is equal to 8 mega. There are 8 mega pages. Number of pages are 8 mega implies page number is equal to 23 bits. Page number is equal to 23 bits. देखिएगा सीक्वेंस कैसे बनाए हम. ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वर्चुअल एड्रेस. चलिए आपको वर्चुअल एड्रेस का फॉर्मेट पता है ऑलरेडी. वर्चुअल एड्रेस का फॉर्मेट आपको पता है. तो वर्चुअल एड्रेस पी एंड डी, राइट. देखिएगा पी की वैल्यू अभी हमने निकाला 23 बिट्स, डी की वैल्यू यहां पे हमने लिखा 13 बिट्स. तो दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा 36 बिट्स. यही आपका 2 मार्क क्वेश्चन, 36 बिट्स इज आंसर. चेक इट. लॉजिकल लर्नर, क्लेवर फिनिक्स, कहां पर आपने मिस्टेक किया और कीजिएगा प्लीज. दोज हु मेड अ मिस्टेक प्लीज चेक इट. वर्चुअल एड्रेस स्पेस का एड्रेस होता है खान, मिस्टर खान, वर्चुअल एड्रेस स्पेस का एड्रेस होता है, वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस होता है. So this is the idea behind solving this problem. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. We'll take up the next question. Answer this question. इसका आंसर बताइएगा. ओके, क्लेवर फिनिक्स, नो प्रॉब्लम. सिली मिस्टेक्स को कवर करना चाहिए, सिली मिस्टेक्स से लर्न करना चाहिए और फिर वो मिस्टेक्स ना हो ये आप जरूर इंश्योर करना चाहिए. Tell me the answer for this. Okay, Saksham is correct, I think. Clever Phoenix is also correct. Same concept. Consider a computer system with 40-bit virtual addressing. तो मतलब आपका वर्चुअल एड्रेस की साइज है 40 बिट्स. पेज साइज ऑफ 16 KB. पेज साइज is 16 KB. If the computer system has a one level page table per process and each page table entry require 48 bits, so 6 bytes, 48 bits, then the size of per process table, so therefore page table size कैपिटल N इंटू ई. ई की वैल्यू दी गई है, कैपिटल N हम यहां से निकाल लेंगे. कैपिटल N इज इक्वल टू 2 पावर 40 डिवाइडेड बाई 2 पावर दिस इज 10 प्लस 4 14. इज इट नॉट? सो देखिएगा ये बनेगा आपका 2 पावर कितना बनेगा
26, मतलब this is your page number. So which is 64 MB, 64 M. There are 64 M entries in the page table. तो यहाँ पर रखिएगा 64 M into 6 bytes, 384 MB. So roughly you can say 0.384 GB. Roughly 0.3 GB बोलिए आप, 0.3, roughly 0.3 GB. नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लेके क्लोज करेंगे क्लास. चलिए इसका आंसर दीजिएगा. ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Any answer for this, boys and girls? ओके 128 KB लॉजिकल लर्नर. चलिए स्टार्ट करेंगे. लॉजिकल एड्रेस ऑफ 32 बिट्स, पेज टेबल एंट्री साइज 32 बिट्स, मतलब कितने बाइट्स हुए? 4 बाइट्स. What must be the page size in bytes? Let us assume page size we have to find 2 power x bytes. Let us assume. Let. Such that the page table of the process exactly fit in one frame of memory. तो बच्चों पेज साइज 2 power x है, तो मतलब फ्रेम साइज भी 2 power x होगी. तो चलिए हमें क्या करना है, हमें पेज टेबल साइज डिटरमिन करना है बाय यूजिंग द फार्मूला n into e. क्या होगा? नंबर ऑफ पेजेस 2 power 32 डिवाइडेड बाय पेज साइज 2 power x. दीज आर नंबर ऑफ एंट्रीज. एंट्री साइज 4 बाइट्स, तो मल्टीप्लाई कीजिए 4 बाइट्स, मतलब दिस विल बिकम 2 power 34 माइनस x बाइट्स, बिकॉज 4 is 2 power 2, तो 2 power 34 माइनस x बाइट्स. ये आपका पेज टेबल साइज है. तो एज पर नोशन, एज पर कॉन्सेप्ट, दिस पेज टेबल शुड फिट इन वन फ्रेम ऑफ मेमोरी. तो फ्रेम साइज कितनी है आपकी? 2 power x. So therefore by that convention हम क्या बोलेंगे? यहां पर क्या बोलेंगे? 2 power 34 minus x should be equal to frame size 2 power x. ये आपका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है. ये आपका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है. पेज टेबल साइज फिटिंग इन वन फ्रेम ऑफ मेमोरी, वन फ्रेम ऑफ मेमोरी. So therefore 34 is equal to 2x, x is equal to 17. Therefore page size is equal to 2 power 17, 128 KB. ये है आपका आंसर.
Logical learner is correct. ठीक है? This is a philosophy. I'm gonna give one problem as homework. ये क्वेश्चन है, होमवर्क करके आइएगा. नेक्स्ट क्लास हम इसे सॉल्व करेंगे एंड यू आर गोइंग टू टेल द आंसर फर्स्ट. यू आर गोइंग टू टेल द आंसर फॉर दिस. ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पेजिंग का कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, जहां पर हम परफॉर्मेंस ऑफ पेजिंग की बात करेंगे, पेजिंग विद टीएलबी और परफॉर्मेंस मल्टी लेवल पेजिंग का भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे. एंड देन आई विल स्टार्ट विथ वर्चुअल मेमोरी. आई विल स्टार्ट माई डिस्कशन विथ वर्चुअल मेमोरी. ठीक है? So tomorrow's class agenda will be, we'll solve this problem and then we'll take up a discussion on performance of paging in terms of time and space. Time के ऊपर TLB का concept discuss करेंगे, space के ऊपर multi level paging का concept discuss करेंगे, and then eventually and subsequently we'll start with, maybe briefly I'll also talk about segmentation. Segmented paging के ऊपर भी एक small discussion होगा. फिर उसके बाद हम virtual memory concept start करेंगे. Is it okay? यस. हाँ, इन्वर्टेड पेजिंग भी है, लेकिन अब देखिएगा टाइम के हिसाब से पूरे चीज़ें मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा. लाइक हैश पेजिंग है, इन्वर्टेड पेजिंग है, शेयर्ड पेजिंग है, so many types of paging are there, but in limited fast track course it's not possible to cover the whole course. In my regular जो course मैं पढ़ाता हूँ operating system in the batches here, I have taught for nearly some 75, 70 hours, 80 hours some batches. So how is it possible to cover up in fast track to that length and breadth? That's not possible. So this is just a revision. This is just like a brush up. Okay? I hope you are understanding what I'm trying to say. Yeah, virtual memory will start next class, where we'll discuss like what is virtual memory concept, how is virtual memory implemented, what are the performance issues involved in virtual memory. तो जहां तक हो सके we will try to work out the problem. हाँ ठीक है, देखिए Clever Phoenix, you can register on my telegram channel, official PW telegram channel, and then you can ask doubts there. आप doubts पूछ सकते हो, कोई भी चीज पर पूछ सकते हो doubts. Inverted paging, you can always provide security by placing some additional bits in the page table entry. जो frame table में entries है, उसमें आप protection bits डाल सकते हो. Whether it is conventional page table entry or inverted page table entry, you can always put protection bits for pages and ensure protection and security. You can always do that. That's not a problem. Anything else that you would like to ask before we close the session? Before we close the session, anything that you would like to ask? तो जो बच्चे NIC का एग्जाम लिख रहे हैं, मेरी अपील यही है कि you should have done all PYQs of GATE for your NIC exam, because generally questions repeat होते हैं. तो अगर आपने GATE का प्रिपरेशन किया है तो NIC will be a left hand job for you. For those who are right handers, and those who are left handers, it will be a right hand job for them. GATE preparation is sufficient enough for exams like NIC and ISRO, because that is a subset and GATE is a superset. ठीक है? So all the best for those who are writing exam, NIC exam, maybe tomorrow. I hope you will do well. चलिए, तो आज का सेशन क्लोज करेंगे यहीं पर और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास. टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच. डर की कोई बात नहीं है फिनिक्स. यू हैव टू ऑलवेज बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. सक्षम का मतलब है कॉन्फिडेंस, राइट? सो यू शुड बी सक्षम इन PYQs. व्हाई यू शुड हैव स्ट्रगल? You should not struggle. Keep on practicing, keep on doing the work. You will always be successful. Don't worry.